HTTP, PVSTP, RSTP. This is the core topic. उसके बाद थोड़ा features पढ़ेंगे. The features are like ether channel, inter-VLAN routing, वो पढ़ेंगे. That is next, maybe next class. So today, in this core topic, there is no labs. What is top-down approach? मतलब मैं आपको high level में first teach करूँगा, एक like single line में explain करूँगा HTTP क्या है. उसके बाद next थोड़ा deep जाऊँगा, down जाऊँगा. So थोड़ा deep जाऊँगा, थोड़ा detail में explain करूँगा और deep जाऊँगा, packet level explain करूँगा. ऐसा टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाऊंगा. हाउ मच आपको कितना समझ में उतना ले लीजिए. ऐसा नहीं आपको बॉटम लेवल से समझ में आना चाहिए, वो दैट इज नॉट रिकमेंड. इतना तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आई विल गो एज बॉटम एज पॉसिबल. आपको एटलीस्ट आपको हाई लेवल समझ में आ गया ना, वो तो आई एम हैप्पी विद दैट. या बैकअप सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी सपोर्ट और बैकअप, प्राइमरी सेकेंडरी बैकअप. लेट्स यूज द वर्ड रिडंडेंसी और secondary, okay, or backup. These are the terminologies. So the word we use is redundancy here, but उसका दूसरा नाम है, नाम हम ऐसा बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बैकअप लिंक है. Okay, और sir, your voice is little bit low. If you could little bit low, is it okay now? Okay, I will put my wireless. I'll put my wireless equipment. See, it is working. No, it's not. The voice is not. I mean, the volume is. Let me connect wireless equipment. टॉप बॉटम अप्रोच, हाई लेवल एक्सप्लेन करूंगा पहला, उसके बाद थोड़ा डीपर जाऊंगा, ऐसा टीच करूंगा. 3 लेवल 4 लेवल्स में मैं आपको टीच करूंगा. सो पहला हाई लेवल समझ में आना चाहिए. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मतलब बैकअप, अदर वर्ड इज रिडंडेंट. ओके, अभी एक देखिए, हमारे पास एक 2 स्विच है. अभी ये स्विच है बिल्डिंग 1 में है, ये SW2 बिल्डिंग 2 में है. ये 2 बिल्डिंग के लिए मैं कनेक्ट करना हूं. मैं एक पीसी है, एक सर्वर है. अभी ये पीसी ना इस सर्वर को कम्युनिकेट करना है. कैसे कम्युनिकेट करेगा? नाउ हाउ द कम्युनिकेशन विल हैपन, बोलिए ओम प्रकाश जी. पीसी 1 एक मैसेज डेटा भेज रहा है पीसी 2 को. ओके, सो इट विल गो टू पीसी 1 टू SW1 इंटरफेस 2. Right? Then what SW1 will do? It will move from SW1 to, I mean, SW1, it will be transferring to other interface also. Which ports will send the data? 3. Only 3, yeah? 1 and 3. 1 and 3. Okay. It will do frame flooding, correct? Yes. Because it don't know the destination port, destination MAC address. For example, मैं लिख रहा हूँ MAC address CCC है. इसका एक टेबल है ना, इसका टेबल नाम क्या बोला मैं आपको? मैक एड्रेस टेबल, याद है? अभी इस टेबल में नहीं है मतलब क्या करेगा वो? इफ इट इज नॉट देयर, ये फ्रेम फ्लड कर देगा, सबको भेजेगा, इसको भेजेगा, सबको भेजेगा, करेक्ट? सोर्स पोर्ट को नहीं भेजेगा. क्लियर ना? ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? हम फ्रेम फ्लडिंग बोलते हैं, समझे? अभी डेटा इधर से शुरू हुआ, 2 में आया, उसके बाद ये डेटा इधर जा रहा है, SW2 पोर्ट 1 में चला गया. अभी इस पोर्ट से इंटरफेस 1 से क्लियर ना? नाउ इन कंपनी में अभी एक कंपनी चल रहा है, उस कंपनी में ये बिल्डिंग है ना, ये 2 बिल्डिंग का डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर. कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ये 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2, समझ में आ गया ना? बी मतलब बिल्डिंग. अभी ये 1 किलोमीटर का एक बिल्डिंग है, उसके इन बिटवीन हमने केबल डाला है, ऐसा एक फाइबर केबल डाला है. सुस हमने डाला एक फाइबर केबल. तो डेटा ऐसा जा रहा है, सर्वर उधर है, पीसी इधर है, ऐसा कम्युनिकेट हो रहा है. बट कंपनी में क्या बोल रहा है? देखिए अभी ये सम रीजन नो ये केबल कट हो गया. व्हाट विल हैपन? यू नीड टू डिग अगेन द होल 1 किलोमीटर, पुट अनदर केबल, करेक्ट? सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? एटलीस्ट 3 दिन लगेगा, राइट? सो कंपनी में वेट कर सकते क्या 3 दिन विदाउट केबल, विदाउट कम्युनिकेशन विद सर्वर? विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट वेट, राइट? Yeah. You understand, no? Yeah. So what we will do, we'll put a backup link or redundant cable. Understand? Yes. That, see, for example, this is like, this is your primary link. Let me write down here. ये primary link है. अभी ये primary link को मैं primary link कैसे रख रहा हूँ? मैं आपके एक बार redundant link डाल रहा हूँ. Okay. Okay. This is what we call is
redundant or secondary link और बैकअप लिंक, कुछ भी नाम बोल दीजिए चलेगा, बट सेम मीनिंग है. redundant, secondary. आफ्टर पुटिंग redundant लिंक क्या क्या होगा, कैसा स्विच क्या करेगा, स्विच का नेचर क्या है? So it will be flowing as per the primary link. नो स्विच कैसे काम करेगा? So it will go to it will go to 2 जाएगा उसके बाद, and then 1 and 3. No, not 1 and 3. You to explain the flow. There is something called verifying the destination MAC address. Destination MAC address क्या है broadcast के लिए? F याद है? Yeah. So FFF आएगा. So FFF देख लिया मतलब वो broadcast तुम समझ लेगा, वो सबको भेजेगा except source port. अब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. Okay, understood. Now क्या होगा? ये ऊपर चला गया अभी. For example, let us leave this part. Let us take this one packet. हम one packet discuss करेंगे. Okay? We'll take one packet and discuss. Then you'll understand. Now the packet came. Broadcast इधर से इधर आया. ये switch देखा, अच्छा ये broadcast packet है. So मुझे सबको भेजना है. So इधर भेज दिया वो. So इधर आ गया. अब ये broadcast packet किधर आया? Switch 2 में आ गया. Switch 2 क्या करेगा? SW2 क्या करेगा? वो देखेगा destination MAC address क्या है broadcast. वो क्या करेगा? Switch 2 again वो भी flood करेगा. समझा ना? फ्रेम फ्लडिंग करेगा, करेक्ट? सो वो भी भेजेगा, 2 को भेजेगा, 3 को भेजेगा, सबको एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट, ये सबको भेज देगा, करेक्ट? अब क्या हुआ? फिर वो सेम पैकेट स्विच 1 को आ गया. अच्छा. ओके. अभी स्विच 1 क्या करेगा? फिर रिपीट कर देगा. भैया आप कौन है, आपको किधर जाना है? आपको जाना है ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट मतलब FFF. अच्छा FFF मतलब मैं सबको भेजूंगा फिर, करेक्ट? तो फिर 2 को भेजेगा, 1 को भेजेगा. फिर मतलब ब्रॉडकास्ट है ना, घूमता है इधर, लाइक अ स्टॉर्म. इट इज द साइक्लोन, नो साइक्लोन, ट्विस्टर, स्टॉर्म, ऐसा समझा ना? इज रोमिंग. इट विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड व्हेनेवर यू कनेक्ट a redundant लिंक. ओके, क्या होगा? पैकेट्स तो लूप ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म शुरू हो जाएगा. स्टॉर्म हुआ तो ब्रिजिंग लूप क्रिएट होकर पूरा स्विचेस विल गो टू हाई यूटिलाइजेशन. रैम सीपीयू विल गो 100%. बिकॉज ऑफ दैट द होल नेटवर्क गोज डाउन, नेटवर्क फेल्स. ये समझ में आ रहा है आपको? Yes. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. कैसे सॉल्व करेंगे हम? सो वी कैन नॉट से नो, अच्छा भाई अभी केबल डालो तो ऐसा हो रहा है, केबल निकाल दूं, 1 वीक वेट करो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, we can't say that, right? कंपनी में redundant cable चाहिए. We can't say that. We can't say to company people because of this loop will create, sir, we cannot put extra cables. Redundant backup नहीं दे सकता. We can't say that. So we must give backup. So उसके लिए solution क्या है? Okay, this is the answer. I will explain you with a story. Let's take one small story so you'll easily understand this. Now you are actually ओम प्रकाश जी, आपका घर से ऑफिस है ना? फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है. सो आपने एक रूट चूज किया, अच्छा रूट था वो, एक रूट चूज किया. यू आर डेली गोइंग इन दिस रूट. फॉर सम रीजन द रूट इज बिकमिंग वेरी बिजी, द रोड इज वेरी बिजी. ओके, सो व्हाट यू डिड इज you find alternate route, backup route. Okay, but what is happening is once you open this another road, there are some people unnecessarily roaming like this, just to create a nonsense traffic, right? They are roaming like this. It's called spanning. They're just roaming like this. So I don't want anybody to roam like this and unnecessarily create traffic. You'll see checkpost, right? Yeah. So what they'll do? What is that bamboo tree? You see bamboo tree? They'll put one long Yes. bamboo tree, right? Bamboo tree, right? Yeah. So they will put it a tree. They will stop the cars. They will check and then they'll open the tree. Same way here. I'm going to put one tree. Yes. Why we created two links? Because whenever it is failing, I want to use that. Correct? That was the purpose, right? अभी तो वो purpose solve कैसे करेंगे? Whenever this is failing, whenever primary link is failing, I'll remove the tree so I can use the redundant link. Whenever primary comes back, I'll again put the tree. Yes. This is called spanning tree protocol. So what spanning tree protocol does is it will block all the redundant links. Whenever primary link fails, automatically open the redundant link.
If anybody asks you what is spanning tree, it's a L2 redundancy protocol. क्या करेगा वो? See, there is a problem when you connect a redundant link. It will create loops. To avoid the loop, we will use STP. Okay? STP, how it is doing it? It is very simple logic है. Primary को छोड़कर redundant link को block कर देंगे. Okay? Whenever primary fails, I'll open the redundant link. Again, फिर primary आएगा तो redundant link को block कर दूंगा मैं. Okay. That is the function of STP. Yes. So analogically, they are using tree word, like blocking the tree in the like a checkpost. Checkpost में हम tree डाल के block करेंगे ना, bamboo tree डाल कर. समझ में आ गया ये? Yes, yes, yes. This is very, very high level. I told you, very, very. I will go next level, deeper level. If this is clear, means I'll go next level. Yes. Vijay, Sandhya, Shiv, all are clear. 3 are clear. Because this is high level a high level understanding. उसका deep जाएंगे ना, ये high level understanding हो तो deep नहीं जा सकता. So basically it is going from PC1 to SW1, from SW1 to. So basically what is happening is the data is traveling from what is STP. Once you are connecting like this, what STP will do is STP will send something called BPDU. What is BPDU packet? Something like hello, like that. Understand? So I am saying like hello, Om Prakash ji, are you there? Right? What is that? That is basically I am checking your availability, right? Are you there or not? Correct? Like a hello packet. It's called hello. Same way, STP will also send hello every 2 seconds. Now, this packet you will do 2 things. The function of this packet is 2 things. One is, for example, you take like this port number 1 is a primary route, right? It will send in that packet in this side. Now, what will happen? The BPD will go. Once it sends in port 1, it will start listening in all the other ports. So the switch knows that I send the BPD in 1, right? Then they listen in all the other ports. For example, in this case, 2, 3, no, all the ports listen. What the packet will happen now? The packet will go to, the moment SW1 receives the packet back, the same packet coming back, it will understand there is a loop. It will block this link. No. Can you please repeat? Can you please repeat for last now seconds? Every 2 seconds it is sending BPDU, understood? So now what is the purpose of BPDU? 2 functions. One is to identify loops. So कैसे identify करेगा? For example, you have a 24 port switch, okay? It will send in the port number 1, it will send the port number 1, it will send the packet. One is, I know I send in 1, then I will listen in 2 to 24, I will listen. So so what will happen? The packet will go and come back, right? If anywhere it's coming back to any port 2 to 24, it will understand there is a loop. So it will put blocking that interfaces. Okay. In this case, what will happen? The packet is going here, everywhere it will travel, and the packet is coming back. The moment it comes back in 3, switch 1 understands, okay, my BPD is coming back, right? I'll block it here. So if you could help me out on point number 2, find the best path. So basically, so best path means what? I mean, so basically, for example, no. For example, take here. This is one path. This is another path. So how? I mean, the STP function by default it will analyze it. That will study. Okay. See, this is, I am telling you, I'm going step by step. So now next step is each and everything, how the algorithm works. We are going to discuss. Okay. That is next step. But first step is I have teach you BPDU. Then I explain you what is the purpose of BPDU, right? क्या करेगा, क्यों चाहिए? Yes. BPDU क्यों चाहिए? और BPDU का काम 2 काम है. एक है आइडेंटिफाइंग लूप्स, दूसरा है रूट ब्रिज कैसे अलग करने के लिए यूज करेगा वो. सेम BPDU यूज्ड फॉर electing the root bridge. ओके, अभी ये रूट ब्रिज क्या है? एसटीपी में एक फंक्शन है भाई, फर्स्ट वो रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लेगा. फॉर एग्जांपल 100 स्विचेस है ना, 100 स्विच में एक स्विच को रूट ब्रिज बना लेगा वो, और सब स्विच को बोल देगा बेस्ट पाथ ढूंढ कर आ जाना, मुझे जस्ट फाइंड द बेस्ट पाथ टू रीच रूट ब्रिज. ओके, एक बेस्ट पाथ मिल गया तो दूसरा पाथ ब्लॉक कर लेना, रंजन लिंक को ब्लॉक कर लेना. ओके, सो देयर इज नो लूप विल हैपन. अंडरस्टैंड? Yeah. This is the way the STP works. Now, this is very second level I taught you. Which is second level. Now, third level, deeper level, we are going to discuss each and every steps, like election, how election will happen, how the STP will select the best path, right? This is clear. Second step clear, right? Sure. Now, third step. Now, third step, if you see,
Now when you take a BPDU header or BPDU packet, उसमें बहुत information आएगा. Will be lot of information will be there if you see that one BPDU header. BPDU packet में आप open करके देखेंगे ना, उसमें बहुत information रहेगा. Right? Now उसमें से हम दो information we will take. So this is the priority number. MAC address, you know, A, B, 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 like that. Okay, something like that. MAC address, you know. Now what switch will do is, the moment STP started working, first thing what switch will do is, it will take these two. What are the two? Bridge priority number and MAC address, right? It will combine these two. So what is bridge ID? Bridge ID is nothing but priority number plus MAC address. For example, here, for easy understanding, I'm just putting 1122 like that. Otherwise, it will be difficult to understand. Real time, it will not be like this. Okay. MAC address, I'm just giving 11122222. Easy to understand. Okay. So 32. So in the bridge ID, okay. So help me out to understand. So in bridge ID, there is a MAC address and the priority number. Both are there, right? In the bridge ID. Correct. First, let us start with priority number. So how many digit is the priority number? 32,768. Okay. Not digit. It's a decimal number. So then 3276 MAC address. Okay, 3276 it would be the common for all. So just same, right? Same, right? Priority number would be same. If it is same, okay. If it is same, then it will go to lowest to MAC address. First, it will check the lowest to bridge priority number. If the priority number is same, then it will take the lowest to MAC address. Now tell me who is having lowest to MAC address. Then what is the fastest way to reach Prime Minister? Everybody will get that information. अभी मुझे Prime Minister मिलना है, कितना fast में मिलूंगा उसको? Okay? What is the best way to reach the Prime Minister? Correct? You understand what I'm saying, right? अभी मैं मेरा मिनिस्टर्स में एक प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट किया और सभी मिनिस्टर को बोला आपको मिनिस्टर को मिलना है ना, प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, दिस इज द बेस्ट वे. और रिडंडेंट वे भी रहेगा. अनदर वे इज टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड कमिंग थ्रू हिज वाइफ, प्राइम मिनिस्टर वाइफ, other way, right? Family, you can meet through them, him or family also, but the best way is going through PA, correct? So that is second. Third things are, rest always you block. Somebody comes and tells, sir, I will arrange a meeting to Prime Minister, sir, I know how to meet, I know I have the best way, I don't want you. I'll block all the other ways, other links, correct? Say, I'm a minister, I want to reach Prime Minister, I've selected the best way to reach the Prime Minister, rest all I blocked. When my primary link is not working, then I'll find the other options, backup links. Understood? Yes. That's the same analogy. Now there are three switches are there. In that, one switch will become root bridge. Yes. For example, हमारा root bridge है SW1. Okay? अब SW2 ना, SW1 जाने के लिए दो पाथ है. एक है पोर्ट 1 से जा सकता है. Yes. है ना? ये रूट ब्रिज को जाने के लिए दो तरीके हैं. अभी इसमें कौन बेस्ट है? ये बेस्ट है, वन बेस्ट है. इसको ब्लॉक. अभी ये हाई लेवल अंडरस्टूड ना हाउ एचटीपी वर्क्स. एक रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लेगा, दूसरा स्विचेस को बोल देगा ये बेस्ट पाथ है आपके लिए, जाओ, ये दूसरा को ब्लॉक कर दो. ओके सर. क्लियर, राइट? उतना क्लियर है? यस. ओके. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ रूट ब्रिज इलेक्शन विल हैपन, हाउ द स्विच विल फाइंड द बेस्ट पाथ. अब ये पैकेट का काम क्या है? दो काम है. एक है लूप आइडेंटिफाई करना. लूप मतलब अभी ये भेज देगा, दूसरा पोर्ट्स में लिसन करेगा, सेम पैकेट रिटर्न आ गया है ना, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस लूप, इट विल ब्लॉक कर देगा इसको. ओके. Yes. To identify the loop, it is first BPDU is used. The second important function is election of root bridge. हमको पता है ना रूट ब्रिज इलेक्शन होना चाहिए, राइट? उसके लिए भी BPDU यूज होगा. अब इसमें कैसे यूज होगा? BPDU में से दो इंफॉर्मेशन वो लेकर एक आईडी फॉर्म कर लेगा. वो दो इंफॉर्मेशन वो क्या है? एक है प्रायोरिटी नंबर, एक है मैक एड्रेस. Yes. BPDU से हेडर से दो इंफॉर्मेशन वो ले लेगा, उससे एक फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? एक आईडी फॉर्म करेगा. उस आईडी का नाम क्या है? ब्रिज आईडी. To reach root bridge. When I say this port is a root port, if I send the packet in that port, it will go to root bridge. So PC1 would be the root port. No PC1 switch only we are discussing. Okay. See, STP is between switches, not between PC. अच्छा. Okay. PC
The discussion is only switch to switch, okay? No PC to switch. Okay. STP will not run in PC. Correct. So the port which will take the packet to root bridge is root port, okay? So now my question is, SW1 port number 1, what role will come? RP, DP or BP? When you make one switch as a root bridge, that switch no port can be blocked. And you cannot say any root port because he himself is a root bridge. He cannot say take this port and go to root bridge, correct? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं नहीं बोल सकता ना बेस्ट वे टू गो दिस गाय, राइट? आई एम प्राइम मिनिस्टर, राइट? I can't say that there's a best way to work. So I can't block any port. I have to allow everyone to speak to me because I am the core person, right? I cannot say I'll not speak to you, right? Because I'm a core person and everyone has to come to me only. So I can't block. I cannot give best way to reach me myself.